जाकिर साहब ने एक बहुत बेसिक सवाल पूछा है। इसके सवाल के जवाब में बहुत से लोगों को हेल्प मिलेगी जिनको प्रॉपर तारुफ नहीं हुआ है अल्नाफी का या एआई ऑप्स का। ये खुद एफएससी हैं और ये कह रहे हैं कितने घंटे की पढ़ाई करनी होगी इनको और टोटल कितने आवर्स होते हैं एआई ऑप्स के अंदर और पढ़ाते क्या है इसके अंदर। क्या वो ये कोर्स कर सकते हैं? उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं है उनको चीजों के बारे में, और वो एआई के बारे में और आईटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और तो इंटरमीडिएट है बेसिकली। हाउ ओल्ड इज तो ही? बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू लोगों के लिए बहुत काम आएगा ये। ये कितने साल के हैं? 19-20 साल के। सो आजकल के ज़माने में ये मुझसे 2018 में 2019 में किसी ने सवाल किया था, कौन ये कोर्स कर सकता है? जब हम लोग ना छोटे-छोटे कोर्सेज़ पढ़ाते थे। उस टाइम पे मैंने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अब हम उस तरफ जा रहे हैं, बन गया सब कुछ। एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि अगर आप इस दुनिया में हर किसी को स्मार्टफ़ोन सबके पास है, राइट? ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, इंडिया में सबके पास स्मार्टफ़ोन है, बांग्लादेश में सब एवरीवन हैज़ अ स्मार्टफ़ोन। They know how to open WhatsApp. They know how to respond. They pretty much everyone has a Facebook account. Pretty much everyone is on TikTok. I'm not on TikTok, by the way. I don't use it. The company has an account, but I don't use it. Everyone is on Instagram. Again, this is not something I sit on Instagram, but people do that, right? Everyone, not everyone, but I will say 5 out of 10 people are on LinkedIn because LinkedIn के पास billion audience है, ठीक है? So, अगर आप 19 years के हैं and you come in the new generation, uh, from that age group, like from 16, like 14, 15, 16, 12 साल से 13 साल से बच्चे लेकर, like till the age of 50, you can do all of these things. When you hit 50, you can still learn, but you have to do extra effort, right? The Sahaba became basically, Hafiz at the age of 50, 55, 60 years of age. So you can do it, but you have to do extra effort. Like in my view, 55 to, 60, a person have a very good memory, right? Because I've seen people in that age bracket having excellent memory, right? So अगर आपके पास वो है, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सिंपल कंप्यूटर है जिसमें 8 GB रैम है और 256 की या 250 या 300 जीबी की एसएसडी ड्राइव लगी हुई है और कोई भी 3-4 साल पुराना प्रोसेसर लगा हुआ है, यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आप सब चीज़ें लर्न कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो चीज़ आती है वो आती है टाइम की। आप कितना टाइम लगाएंगे? सो इफ यू कैन डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द सोशल मीडिया, यू कैन लर्न ऑल द कोर्सेज। कोर्सेज कैसे पढ़ने? कोर्सेज लाइन से लिखे हैं वैसे ही पढ़ने, आप वैसे ही पढ़ें। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो अगर आपने वो कर लिया, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्सेज ऑन टाइम एंड यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है? It all comes down to how much time you are willing to invest and how much, and how far you're willing to push yourself, because there's a time limit. ठीक है ना? There's a time limit of being successful. And जैसे हमने बहुत सारे यहाँ पर अपने ट्रेनर्स के लिए भी लेटर लिखे हैं। हमारे पास पहले डॉक्टर सना रशीद काम करती थी and she wanted to apply like a, green card visa for basically O1 visa, E something visa, for US. So we give her the letter. Yes, she has been teaching with us. She did this, she did that. We have already started doing this for our students who are in the States, and we're giving them letters so that they can apply for these things. So we are doing whatever we can in our capacity to help and assist our students. But you have to show that you are willing to work hard. Work hard is something I can't do that for you. This is the only part you have to do it yourself. Reciting kalama is very easy. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. But what happens next is the ultimate test. Many people will fail this test or are already failing this test. So in this month of Ramadan, we should make dua that, oh Allah, that we sign a covenant with you. So हमने आपके साथ एक covenant, contract sign किया. Please give us tawfiq that we can fulfill that covenant, that contract with you. So Allah Ta'ala में तौफीक दे के हम उसका पूरा हक अदा कर सकें.